Good morning, learners. Welcome to e-learning hub. So in this video I will discuss the top 50 and most expected teaching aptitude questions for UGC NET, KVS, B.Ed, CTET and for any teaching exam. टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी आते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 10+2+3 system of education was recommended by. ऑप्शंस हैं कोठारी कमीशन, मुटलियर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. So 10+2+3 system of education was recommended by Kothari Commission. This is the right answer. Next, dash refers to states within a person or animal that drive behavior towards some goal. Competence, affiliation, motivation, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोटिवेशन. साइकोलॉजिस्ट हु डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रेमेडी देम आर कॉल्ड डैश साइकोलॉजिस्ट. ऑप्शन हैं सोशल, कम्युनिटी, स्कूल, क्लिनिकल. सो साइकोलॉजिस्ट हु डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम, जो लर्निंग प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं और उनको दूर करते हैं. तो लर्निंग प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगी? ज़्यादातर स्कूल में आएंगी. सो दीज आर कॉल्ड स्कूल साइकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन मैच्योरेशन इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर because it teaches us that certain skills may be difficult or impossible to learn before a given. ऑप्शन है लेवल ऑफ टीचिंग, इंटेलिजेंस लेवल, सोशियो इकोनॉमिक लेवल, एज लेवल. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, age level. A child with average potential intelligence but fertile environment will achieve a better life, average life, nothing in life, everything in life. So a child with average potential intelligence but fertile environment will achieve a better life. Siblings, parents and teachers are important source of dash for the children. Siblings, parents and teachers are important source of motivation for the children. A good understanding of dash makes us know about ourselves better. So options हैं education, colors, social perception, none of the rest. A good understanding of, इसका right answer है a good understanding of education makes us know about ourselves better. Next, good test of a psychological nature bear the following features. गुड टेस्ट जो है उसमें कौन से फीचर होते हैं? दैट इज ऑप्शंस हैं रिलायबिलिटी, चीपर, गैसिंग पावर, रोट लर्निंग.
So good test of a psychological nature bear the following feature. कौन सा feature? Reliability. Next, mental health is, options हैं harmonious functioning of the total personality, symptoms of maladjustment, terrible excitement, throwing up temper tantrum. So इसका राइट आंसर है मेंटल हेल्थ इज हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड children are faced with problem of coping with school? Toddlerhood, pro-social period, preschool period, middle childhood. राइट आंसर है इसका ड्यूरिंग प्री स्कूल पीरियड children are faced with problem of coping with school. Next, the best way to memorize is study for long time, to understand the concept, to read loudly, to write the concept. The best way to memorize is, अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो ही वो अच्छे से मेमोराइज होगा. The best way to memorize is to understand the concept. Students like teacher who, options हैं has attractive personality, belongs to his her caste, awards good work liberally, has very good knowledge of his her subject. तो स्टूडेंट्स लाइक टीचर, अब ये तो है नहीं कि इनको करेंगे जो उनकी कास्ट से है या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है. सो स्टूडेंट्स लाइक टीचर हु हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ हिज हर सब्जेक्ट. नेक्स्ट, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक्स, to guide students, to use internet in teaching. इसका राइट आंसर है with the development of technology the role of teacher in future will be to guide students. To prepare students as good citizen, a teacher should maintain strict discipline, provide good leadership, be good orator, have good journal knowledge. To prepare students as a good citizen, a teacher should provide good leadership. Next, students should be given homework to study at home, check their progress by teachers, keep them busy, develop habit of self study. So students should be given homework ताकि उनमें सेल्फ स्टडी की हैबिट आ सके. डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल. कौन सी चीज़ नेसेसरी है? प्रिंसिपल एंड टीचर, स्टूडेंट्स, गुड बिल्डिंग, अदर फैसिलिटीज. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूर. क्या नेसेसरी है स्कूल की डेवलपमेंट के लिए? स्टूडेंट्स. इफ ए स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लास, देन you will ignore him, will not allow him to sit in class, will punish him, will allow him to sit silently. If students come late in the class, then you will allow him to sit
silently. The purpose of national education policy is क्या है? ऑप्शंस है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, vocationalization of education, to review the education, to give equal opportunity of education to all. The purpose of national education policy is, right answer is, to review the education. A teacher learns most by his students, his colleagues, his principal, his experiences during training. A teacher learns most by his experiences during training. On first day in class, you will start teaching from first chapter. Take introduction of students and introduce yourself. Explain the syllabus. Explain the rules of school and your teaching way. So on a first day in a class, you will क्या करेंगे आप? Take introduction of students and introduce yourself. The standard of education can be raised by appointing good teachers, providing physical facilities in school, reforming examination system, providing computer in schools. The standard of education can be raised by, एजुकेशन का स्टैंडर्ड तभी रेज होगा अगर टीचर्स बढ़िया होंगे. सो अपॉइंटिंग गुड टीचर्स. द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग नवोदया स्कूल्स इज टू कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान इन रूरल एरियाज, to provide good education in rural areas, check wastage of education in rural area, to increase number of schools in rural areas. So the purpose of establishing Navodaya schools is to provide good education in rural areas. During teaching, a teacher gives example to attract students' attention, to make lesson interesting, to explain the lesson, to continue the lesson for long time. So during teaching, a teacher give example to explain the lesson. If students are not taking interest in your teaching, then you will ignore them, leave the class, ask them to pay attention, change the teaching method. अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो क्या करेंगे आप? इग्नोर करेंगे? गलत. क्लास लीव कर देंगे? गलत है. उनको बोलेंगे तो सिर्फ बोलने से थोड़ा अटेंशन पे होगी? गलत है. सो यू मस्ट change the teaching method if students are not taking interest in your teaching. Next, according to you, the aim of education should be to provide knowledge, to develop personality, to make good citizen, to reform the society. So according to you, the aim of education should be to reform the society. As a teacher, what will you do if students do not attend your class? क्या करेंगे? Options. Blame students for their absence from the class. अगर स्टूडेंट्स क्लास नहीं लगा रहे तो आप स्टूडेंट्स को ब्लेम करेंगे? गलत. Ponder over the present attitude of students in a
calm manner. Think about using some interesting techniques of teaching. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो हमें कम से कम रीज़न पता होने चाहिए कि वो क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. These are the wrong options. So try to understand the reasons and try to eliminate them. Next, there will be better communication in a lecture if a teacher reads from the prepared notes, prepare the notes well in advance and use them as a guide, talks extempore, talks extempore drawing examples from other disciplines. So इसका right answer है there will be better communication in a lecture if a teacher talks extempore drawing examples from other disciplines. Teachers. Next question. Who are enthusiastic in the classroom teaching? कौन से हैं? Often lack proficiency in the subjects which stays hidden under their enthusiasm. Simply dramatize to hold the students' attention. Involve their students in the teaching learning process. All of the above. कौन से हैं enthusiastic teachers जो प्रोफिशिएंसी को लैक करते हैं? गलत है. अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो गया. सिंपली ड्रामेटाइज, सिंपल ड्रामा करते हैं कि स्टूडेंट की अटेंशन को होल्ड किया जा सके. गलत है. ठीक है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. वन कैन बी ए गुड टीचर इफ has genuine interest in teaching, knows how to control students, knows his her subject, has good expression. So one can be a good teacher if he knows his her subject. The most important skill of teaching is making students understand what the teacher says, covering the course prescribed in his subject, keeping students relaxed while teaching, taking classes regularly. सिर्फ कोर्स कवर करना या स्टूडेंट्स को रिलैक्स करना या रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स तो है नहीं. तो क्या है, जो भी टीचर करवा रहा है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Effective teaching by and large is a function of maintaining discipline in the class, teachers' honesty, teachers making students learn and understand, teachers liking for the job of teaching. Effective teaching क्या है? Right answer is teachers making student learn and understand. So success of a profession depends upon policy to please individuals, maintaining a relationship with people, maintaining quality of work, loyalty to the superior. प्रोफेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? पॉलिसी टू प्लीज इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल्स को खुश करना है, गलत है. सिर्फ रिलेशनशिप रखना है पीपल के साथ, गलत. लॉयल्टी, सिर्फ लॉयल्टी रखनी सुपीरियर्स के लिए, गलत है. सो सक्सेस प्रोफेशन की किस पे डिपेंड करती है? मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क. मेन रोल ऑफ टीचर इज आइडेंटिफाइड विद ए लीडर, planner,
manager, motivate. So main role of teacher is leader. Prior to teaching, the teacher does. टीचिंग से पहले टीचर को क्या करना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. सो टीचिंग से पहले हम क्वेश्चन नंबर 34 पे थे. टीचिंग से पहले टीचर को ऑब्जेक्टिव्स भी पता होने चाहिए, टीचिंग लेसन प्लान भी प्रिपेयर करना चाहिए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Effective teaching include teacher is active but students may or may not be active. टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, गलत है. टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव. अब ये भी गलत है, टीचर इनएक्टिव है तो स्टूडेंट. अब ये दोनों गलत हो गए तो ये भी गलत हो गया. तो राइट ऑप्शन क्या है? टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज. टीचिंग की इमीडिएट आउटकम क्या है? चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्डिंग करेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स, गेटिंग सिलेक्टेड फॉर ए सूटेबल जॉब. टीचिंग की इमीडिएट आउटकम है changes in the behavior of students in desirable direction. Basic requirement of teaching efficiency is mastery on teaching skills, mastery over use of different technique of teaching, mastery over appropriate use of media and technology in teaching, all of the above. बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग एफिशिएंटली कब होगी? अगर टीचिंग स्किल्स भी पता है, अलग अलग टेक्निक्स भी पता है टीचिंग की, और हमें ये भी पता है हाउ टू यूज़ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. सो डी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूजफुल in ensuring students' active participation in learning, memorizing the fact by students, making students disciplined, preparing students for examination. क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके. सो ensuring students' active participation in learning. A teacher wants to enhance his income. You will advise him her to. टीचर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, आप क्या एडवाइस करेंगे? टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम, टेक मोर remunerative works in school, college, join contractual assignments other than teaching, writing book. तो इसका आंसर है कि अगर स्टूडेंट ने अपनी इनकम बढ़ानी है तो he must write books. As a principal, you will encourage your teacher colleagues to participate in seminars, in conferences in India and abroad, participants in refresher courses, doing community services for upliftment of downtrodden, all of the above. So as a principal हमें अपने colleagues को encourage करना चाहिए कि वो सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट करें, रिफ्रेशर कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी सर्विसेज भी करें. सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी. टीचर शैल inculcate social and moral values among students by delivering lectures on value, showing TV programs, involving students actively in co-curricular activities, observing religious festivals. So teacher shall inculcate social and moral values among students by involving students actively in co-curricular activities. The most
significant approach of evaluation is, important क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा, continuous and comprehensive evaluation, conducting objective term and examination, maintaining cumulative record of students, semester system examination. The most significant approach of evaluation is continuous and comprehensive evaluation. Educational technology is useful because it is the need of the hour, it is adopted by famous institutions, it makes teaching effective and efficient, it attracts students toward teaching and learning activities. So educational technology is useful because it makes teaching effective and efficient. A teacher must have mastery over his subject for options are alertness, making impact on students, interest, making teaching effective. A teacher must have mastery over his subject for making teaching effective. The term kindergarten means, kindergarten का मतलब क्या है? चिल्ड्रंस का घर, चिल्ड्रंस स्कूल, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड. So kindergarten means children's playground. The Kothari Commission report on education was entitled as, कठारी की कमीशन की रिपोर्ट थी जो एजुकेशन में, उसका टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू बी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. उसका एंटाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज inculcation of knowledge, modification of behavior, personal adjustment, acquisition of skills. The most appropriate meaning of learning is modification of behavior. Teachers' knowledge on students' needs and interests are covered by the subject. Teachers' knowledge on student need and interest are covered by the subject. कौन सा सब्जेक्ट? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन. इसका राइट आंसर है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन. वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन मीन्स education for productivity with rural, working for a new social order, experience in industrial and technological world, education for orientation toward vocational courses. So work experience in education means education for orientation towards vocational courses. Next, integral education concept is propounded by Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi ji, Swami Dayanand ji, Swami Vivekanand ji. So integral education concept is propounded by Sri Aurobindo. So option A is the right answer. So इस वीडियो में मैंने 50 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के. ये कोई भी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होते हैं. ठीक है, तो कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.